Next, we will talk about venous system of pigeon, and it comprises of two precavals, one postcaval, and one pair of pulmonary veins. Two pairs of pulmonary veins. Now, the pulmonary veins, they will release their contents into the left auricle, and two precavals and postcaval will release their content, that is deoxygenated blood, into the right auricle. Precavals are composed of, each precaval is composed of common jugular and subclavian, one pair each. And postcavals, they are composed of two iliacs, few hepatic veins, and one pair of epigastric vein. And in addition to all these veins, renal portal system and hepatic portal system is also present in the pigeons. So now we'll discuss that in detail. So first of all, we'll talk about pulmonary veins. Four large veins return blood from lungs. You can see these veins as red color here. These are four large veins which are termed as pulmonary veins. They will collect blood from the lungs and open into the posterior part of the left auricle. So this is left auricle. लेफ्ट ऑरिकल के अंदर एक कॉमन अपर्चर से ये चारों वेन्स जो हैं वो ओपन होती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल के अंदर रिलीज करती हैं. Now the next we'll talk about precavals. Precaval return blood from head, neck, wings and chest region. जो right precaval है, that is very much short, being only 6 mm. You can see this is right precaval. This is only 6 mm long structure, and left precaval is very much long in comparison to the right one because it has to travel over the dorsal surface of the entire left auricle and राइट ऑरिकल टू ओपन इनटू द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द राइट ऑरिकल. यहाँ पर ये ओपन होगी जो लेफ्ट प्रीकैवल होगी, सो दैट विल बी स्लाइटली लॉन्गर. ईच प्रीकैवल इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ टू मेजर वेन्स which is subclavian, which is shown here in blue color, and common jugular, which is shown here in green color. Now we'll talk about these कि ये कहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती हैं. So first we'll talk about subclavian. Subclavian vein is a cylinder vein which receives two veins, brachial and pectoral. Brachial from the wing and pectoral from the muscles, flight muscles. जैसे कि हमने आर्टीरियल सिस्टम में किया था, तो उसका रिवर्स जहाँ सप्लाई किया था वहीं से ये कलेक्ट करेंगे, एंड द नेम इज़ ऑल्सो सेम. तो ब्रैकियल जो है वो विंग से कलेक्ट करेगी, पेक्टोरल जो है पेक्टोरल मसल से कलेक्ट करेगी. उसके बाद एक इंटरनल मेमोरी होगी, इंटरनल मेमोरी वेन which will collect blood from the chest region of the pigeon, and these three unite together to form subclavian, which will join to the precaval of either side, दोनों साइड की. Now the next vein which join in the precaval is common jugular of both sides. They will run along the entire length of the neck, पूरी neck में ये run करेंगी, and they will collect blood from the head region through external and internal jugular. So that is external and that is internal jugular. External and internal jugular, they will join together, will collect blood from brain and head region, and they will move downward. In the way they will receive vertebral vein, एक vertebral vein जो है उसको receive करेंगे, and that is from the spinal cord. Spinal cord से blood को ये collect करके लाएगी और इसके अंदर pour करेगी. Now they will join to the precavals of the either side. Now these jugular will be connected at the anterior portion. अब दोनों तरफ की जो jugular हैं, common jugulars, they will be connected, which is now termed as transverse jugular anastomosis. You can see here jugular anastomosis, jugular anastomosis. So this is an adaptation for shunting the blood from one jugular to other as the head is turned around and one jugular is blocked. मतलब एक जुगलर से दूसरे जुगलर में जो ब्लड है उसकी शंटिंग हो सके, उसके लिए होता है. जैसे कि बर्ड ने अगर अपनी नेक जो है वो मूव की है, बर्ड ने अपनी नेक जो है पीछे की तरफ घुमाई है, तो एक तरफ की जुगलर बंद हो जाएगी. तो उस केस में क्या है कि हेड से जो भी ब्लड आ रहा है वो रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पर उसकी कलेक्शन नहीं होनी चाहिए. तो दैट प्रोवाइड द शंटिंग, कि अगर ये वाली बंद हो गई तो जो हेड से ब्लड आया है वो इस तरफ से निकल जाएगा, और अगर ये वाली बंद हो गई तो वो इधर से निकल जाएगा. सो दैट प्रोवाइड द शंटिंग ऑफ द ब्लड. So that is the function of jugular anastomosis that can be asked in 1 marks question. So that was all about the collection of the blood from the anterior portion of the body, that means head, neck, wings and chest region. Now we'll talk about postcaval. Postcaval brings blood from the posterior part of the body. Body के posterior portion से blood को collect करके लाएगी, including liver, kidneys and gonads. It is formed by union of two iliac veins. You can see ये जो green वाली हैं,
जो किडनी के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, these are termed as iliacs. These are iliacs. Now two iliacs vein, they will join together to form postcaval. Now this postcaval, it will enter into the right lobe of the liver and it will be joined by several hepatic veins. ये एक hepatic vein, ये यहाँ से दूसरी hepatic vein इसको join करेगी and along with वन एपीगैस्ट्रिक. हिपैटिक जो है वो लीवर से ब्लड को कलेक्ट करके इसके अंदर पोर करेंगी. जो एपीगैस्ट्रिक है दैट विल कलेक्ट द ब्लड. हियर इट इज़ एपीगैस्ट्रिक, ये जो बाहर से आ रही है, दैट विल कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द मेसेंट्री ग्रेट मोमेंटम. नाम क्या है मेसेंट्री का? ग्रेट मोमेंटम. दैट इज़ अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच इज़ लोडेड विद फैट एंड लाइंग वेंट्रल टू द गिजर्ड एंड इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन और गिजर्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. तो उस मेसेंट्री से ब्लड को कलेक्ट करेगी और इसके अंदर पोर करेगी. Now this postcaval will move ahead and will open into the right auricle of the heart. उसके अंदर ये open हो जाएगी and will release all the deoxygenated content into the right auricle. So this was all about the postcaval. Next we will discuss about the portal systems.